Hello everyone, how are you all? Today we will read our next topic, that is different types of energy. Okay, of chapter 5 science. You can also open your books along with you, page number 64. Today we will do different types of energies. Okay, in the last video what we have done beta, we have done that energy from different sources कि कौन कौन से sources से हमें energy मिलती है, like wind से, water से. Okay, बट टुडे वी विल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ की क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी of a body due to its motion. When any object is in motion, like a moving car, like a moving ball, ठीक है, आपकी बॉल मूव कर रही है, so at that time your object has kinetic energy in it. Okay, the energy of a body due to its motion, that is called kinetic energy. Okay, example I already told you, moving car, flowing water, rolling ball. ठीक है, anything that is moving, that is in motion state, that object will have kinetic energy at that time. Now next is potential energy. The energy stored in a body due to its position or height is known as potential energy. बेटा potential energy की क्या होता है? when an object is at height, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है, at that time it has potential energy in it. Okay, so the energy stored in a body due to its position or height, that is known as potential energy. So for example, we will take example of water here. If we will store water in a dam, अगर हम एक डैम में वाटर स्टोर करते हैं, then during that time the water has potential energy in it. The water has potential energy in it because the water is stored at a some height. Okay, वाटर को हमने कहाँ पे स्टोर किया बेटा? कुछ हाइट के ऊपर, क्योंकि डैम जो है वो थोड़े से ऊंचे होते हैं ना. सो दैट्स वाई व्हेन वी स्टोर वाटर इन अ डैम, देन एट दैट टाइम दैट वाटर हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी इन इट. ओके, सो द एनर्जी stored in a body due to its height or position, that is known as potential energy. Now beta next is mechanical energy. Mechanical energy क्या होता है बेटा? Mechanical energy is the energy that is the sum of both the energies, sum of kinetic energy plus potential energy, then that object has mechanical energy. How? I will take an example for you. Let's take example of aeroplane. ठीक है, let's take example of aeroplane. So before flying, उड़ने से पहले एरोप्लेन होता है, that runs on a road ना for some time, वो कुछ टाइम के लिए रोड के ऊपर रन करता है. So during this time when aeroplane is running on the road, then it is in motion state. ये motion state में है. Then what kind of energy it has? It has kinetic energy. Now after some time, after running on the road, then it will start flying upward, in the upward direction. Now it is flying na in the upward direction. Now it has potential energy in it. It has potential energy in it. So aeroplane has kinetic as well as potential energy. Both energies are there. So sum of both the energies are mechanical energy. So we will say that aeroplane has mechanical energy because aeroplane is moving as well as flying at some height. So kinetic energy is also there, potential energy is also there. So what we will say we will say aeroplane has mechanical energy because both energies are there, kinetic as well as potential. So this is beta, mechanical energy is defined as the sum of potential energy and kinetic energy. So mechanical energy is the energy that an object has due to its motion, or it is the energy that is stored due to its position. Okay, कि जब कोई object motion में भी है और and it is also at some height. Okay, so during that time it has mechanical energy because it is having both the energies, kinetic as well as potential. I have already explained you with the help of with the example of aeroplane. Now next is heat energy beta. Heat energy, this is very simple. Heat energy from where we get heat energy? From the sun, है ना, हमारे पास सन से सनलाइट आती है. So we are receiving heat energy. We are receiving heat energy na in the form of sunlight की फॉर्म में we are receiving heat energy. So the heat energy is the energy that we are getting from the sun, and there are also few things from where we are getting the heat energy, like
burning fuels like wood, coal and kerosene. when we burn wood, बेटा जब हम wood को जलाते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना. कोयले को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम विच एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी we get from the sun as well as from the burning fuels like wood, coal and kerosene. So these substances gives us heat energy. Okay, electricity also produces heat. How electricity also produces heat, beta? Okay, I will tell you. Like when we keep our light bulb turned on for सो मेनी आवर्स, जब हमारा लाइट बल्ब जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, देन व्हाट हैपन्स, इट बिकम्स हॉट. वी कैन नॉट टच दैट, वी आर नॉट एबल टू टच दैट. सो व्हाई इट हैपन्स? बिकॉज electricity also produces heat. It also produces heat energy. Okay, so this is all about heat energy. Now where we can use this heat energy, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस heat energy को? For cooking food, you all know, फूड को कुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. मूविंग इंजन्स, हाउ वी कैन मूव इंजन्स विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी? बिकॉज बेटा इन सम ट्रेन्स वी पुट कोल, हम कोयला डालते हैं बेटा इंजन्स में, ठीक है. So after burning that koila produce heat energy. So with the help of that heat energy our engines run. Okay, so this is how we can move our engines, heating water and even our homes. Okay beta, now next is light energy. Light energy, light is an important form of energy. It is also important form of energy. Okay, now we, from where we get light energy? One is the sun. सन से हमें हीट एनर्जी भी मिलती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है. लाइट तो मिलती है क्योंकि व्हेन सन सेट्स इन द इवनिंग, जब इवनिंग में बेटा जो सन है वो चला जाता है, देन देर इज़ टोटली डार्कनेस ऑल ओवर अराउंड, है ना, पूरा अंधेरा हो जाता है ना. सो जब सन निकलता है तो इट गिव्स अस लाइट. सो चारों तरफ क्या हो जाती है, पूरी ब्राइटनेस हो जाती है. सो सन इज़ गिविंग अस लाइट एज वेल एज हीट एनर्जी. सो दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. एंड व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट लाइट एनर्जी? दैट इज़ मून, स्टार्स. फ्रॉम मून एंड स्टार्स वी आर ऑल्सो गेटिंग लाइट एनर्जी ना. रात के समय जब हम बाहर निकलते हैं तो मून की भी लाइट होती है, रोशनी होती है, थोड़ी थोड़ी स्टार्स की भी होती है ना. एंड लाइट एनर्जी वी ऑल्सो get from man-made sources. Man-made sources like candles, bulbs, torches, tube lights, these are also man-made sources from where we can get our light energy. Okay, now next is electrical energy. Electrical energy क्या होती है बेटा? That energy that we get from the electricity, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, there are so many gadgets which play with the help of electrical energy, like you can see in the picture, like laptop, TV, है ना, our radio, mobile also we have to charge with the help of electrical energy. So there are so many things where we use electrical energy, and from where we get it? We get it from the electricity. इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलती है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर हमने टीवी ऑन करना हो तो अगर लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ओनली देन वी कैन ऑन आर टीवी. नहीं तो हमारा टीवी चलता ही नहीं है. ऐसे ही हमारा फ़ैन है, हमारा फ़ैन भी नहीं चलेगा, ट्यूबलाइट भी नहीं चलेगी, है ना. लैपटॉप अगर हमारा चार्ज नहीं है तो वो भी नहीं ऑन होगा. अगर चार्ज नहीं है तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो ऑन ही नहीं होगा अगर हम चार्जिंग पे ही नहीं लगाएंगे. सो बेटा देयर इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम थ्रू विच वी कैन use to on the various appliances. Okay, and this energy we get from the electricity. Now next is sound energy. Sound energy is very easy. Sound energy it is produced when object vibrates. जब कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा वाइब्रेट करता है देन इट प्रोड्यूसेस साउंड. ठीक है, या फिर इट मूव्स अप एंड डाउन की तरफ मूव करता है, या फिर बैक एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, देन दैट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. ओके, तो लाइक अ वायलिन, यू कैन सी इन द पिक्चर द गर्ल इज़ प्लेइंग अ वायलिन. वायलिन बजा रही है ना गर्ल, तो जो इसकी स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं बेटा वायलिन पे, दे आर वाइब्रेटिंग. जो स्ट्रिंग्स हैं वायलिन के ऊपर दे आर वाइब्रेटिंग, एंड व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग देन दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड. सो दिस इज़ हाउ from many objects our sound energy is produced. Our sound energy is produced with the help of vibrations. Okay, now next is chemical energy.
chemical energy beta, it is already stored in some objects. This you have to learn like this only, that chemical energy is that energy which is already stored in some objects, like our food. लाइक इन आर फूड, हमारे फूड में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी, है ना. लाइक इन कोल, लाइक इन सेल्स आप डालते हो ना, जैसे आपने उसमें रिमोट में सेल डाला या फिर आप किसी टॉय में सेल डालते हो, है ना, जो उनमें एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज़ नोन एज केमिकल एनर्जी. सो इट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन सम ऑब्जेक्ट्स लाइक इन आर फूड, इन आर ऑयल, coal, batteries that we use in our toys and cars. So this is a kind of energy that is already stored in some objects. Okay, now beta, this was our today's topic, that were the different types of energies, that was the different types of energies, that hope you all have understand about this type of energies. In next video beta, we will read about the energy transformations. We will read about energy transformation, कि कैसे हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, that we will read in next video. And your today's homework is that please read this topic at home. Please read this topic at home, page number 64 and 65. Till then, bye bye everyone.